Okay, hi guys. So yesterday we saw little details about Node.js internals, and today we'll discuss more in depth about event loop and what exactly it means. Before we begin that, we'll just start from the basic level. We'll just discuss the problem, why Node.js was created, who created it. Then we'll discuss something about V8 engine and slowly move towards the phase which we want to learn today, right? So I'll just come and sit in the corner. Yeah. The first thing, what the problem was, right? Uh, so as we know that Node.js is a single-threaded language, right? Right? Node.js is a single-threaded language. So means it can do only one thing at a time, right? Example, imagine you're at a restaurant with a single waiter, right? So the waiter can serve only one table at a time. So if there are three tables and three complex orders, right? And each complex order take 20 to 25 minutes to prepare, like, and the waiter can serve only one table, right? So the remaining two tables get blocked for the remaining 20 minutes, right? So it blocks the entire process, right? Since the waiter here is the single thread which we are considering, right? So we'll just see an example here, like what exactly this means. Like, I'll just hit clear. So this is my code, yeah, right? As you all can see. Yes. So here I have written a console log. Then I'll declare a variable. We'll just calculate the time, how much time this process takes, this while loop. This while true loop always keeps on running, right? I'll just check, like, so this has developed a block here, right? It blocks my process. Like, if I see if I move to 3 seconds and just hit, what do you see here? It has started the process, it waits for 3 seconds and then end. Yeah, I'll just show it once more. Start, it will wait for 3 seconds and just end. What if I do a console log here and I'll just wait for here 1 second and just I'll hit. It is printing for 1 second continuously, means it's inside this while loop for the entire 1 second, and it blocks my entire process, so it can't move outside and print this console. Yeah, so this process, this console has been blocked by this while loop due to the single threaded nature. This is where this was the exact problem, yeah, right? And we know that web runs on network calls, file reads, database queries, all of which takes time. If JavaScript could only do one thing at a time, building a web server would be impossible, right? This exact problem was solved. This exact problem, to solve this, Node.js was created, right? So you just see the history of Node.js, right? So there was a person named Ryan Dell who created Node.js in around 2009 with a single goal to run JavaScript outside the browser and handling thousands of concurrent requests without blocking the whole entire process, right? So how did he achieve this? He did this with the help of two powerful C++ libraries, which were V8 engine and Libuv. We'll see in short, like I've explained it in previous video. We'll just see what V8 engine does. It's a Google's it's a C++, it's written in C++, right? Our Google Chrome also uses the V8 engine, and what it does, it converts my JS code into a machine code. Yeah, this process is called JIT, just in time. मतलब compile इतना ही करो जितना JavaScript को रन करने के लिए चाहिए, right? That what JIT means, right? It also gives us a memory. It also manages our memory, like, and also gives call stack, heap, etc. Right? We'll just discuss it further. And Libuv, what Libuv is? Libuv is a C library that provides an event loop, a thread pool, async IO across all OS. Yeah. So this is what
and there is Node.js bindings, which is written in C++. Yeah, it acts as a bridge between my libuv and the JS code. Yeah, so what happens? You have written something in JS, right? So it gets converted into C++. You have written a function call in JS, right? That function call is converted into C++. That C++ is hit with to external service, and then the data comes. It is again converted into the JS format and then given it to you. That is nothing but the work of Node.js binding, which is yeah. So there are 3 steps. Yeah, JavaScript, which is a single-threaded language, no OS access. Weird engine compiles JS to machine code, memory, call stack. Yeah, Libuv, it is a event loop. It gives a event loop plus thread pool, and async IO, also OS. It can talk to a OS, network, DNS, etc. And these all 3 combining forms a Node.js, which is a complete runtime, right? So what Node.js does, it offloads our slow work, right? What is the slow work? File reads, network call, DNS lookup. So this slow work is done by none other than Libuv. And as Libuv does this slow work, our V8 engine keeps on running continuously, right? It never blocks, right? So imagine the same example which we said previously. There was a one waiter, right? So now what happens, like the same restaurant I go, we order the waiter, we call the waiter, we order our food, waiter then sends the food to the kitchen. Here, kitchen is nothing but the Libuv here. Yeah, the Libuv takes the order and prepares it. Till that time, the waiter again goes to the next table, takes the order. Yeah, so this waiter, which is a JS thread, which is never on idle state, right? And it is never blocked by any other process, right? So that's the long story short what we have learned till now. So what's basically a V8 engine? Yeah, so V8 is an open source JavaScript engine. We'll just write it here. V8 क्या है? V8 एक है open source JS engine written in C++ by Google. Yeah, what it does, it actually runs our JS code where we write our anything, like we'll just declare a variable and assign a addition task like const x 5 plus 3, and then V8 will perform it. So what V8 does for us is it has a call stack which tracks all the functions and which function to run when. Yeah, it's a last in first out. It follows a last in first out approach. Also later it has a heap, which is nothing but meant by our memory, where all our variables, objects, etc. are stored in the memory. It has a garbage collector which automatically frees that memory when it is no longer used. It has a JIT compiler. It compiles JavaScript to fast machine code. Then later it also has something else, but that's not needed for now. It has a call stack. The call stack is the most important part of V8. Yeah, right. Since it with this call stack, JavaScript knows like with the help of this call stack, that's how our JavaScript, it helps us how to execute our JavaScript, like which code to run when and which function to run when. Like I have a small visualizer which is a code here. As you can see, I'll just copy it and just refresh. Yeah, this is my code. You can see it's a normal code. I've written console, again a console, then a function, then again a function, and I've called this function. Yeah, right. So what eventually happens, this is my call stack. Just ignore this task queue, Microtask queue, etc. We'll just focus on, we'll just focus on this thing. Yeah, right here. So what happens, I'll just click on run. As you can see, when I start running my program, what you expect, first this it should run, then this it should run, but after that what? So you can see 1 gets print as it's a normal console, it's a root level code, then 2,
then what happens? This function is called, right? So it goes and this function is called. So this function's body, like this function, will go into my call stack. It will tell that you have to run this. As soon as I go inside this log3 function, I have another function which is a log3. Yeah, so that's get add on to my call stack. If you see, yeah, log3 comes here, and once again, now inside log3, what is written? Console. Yeah, so what you expect? It will console this 3 here, right? So it gets console, this 3 gets console, and the next process, this log gets thrown away. Yeah, then it comes inside this statement on line number 19, it prints 4, and then this is pushed out. Yeah, 4 gets print, and then this is done. So that is nothing but what is meant by our call stack. Yeah, so moving back we'll just see what this is what v8 helps us. There are more things like garbage collector and all, but for now call stack is very important for you to understand. Yeah, later on, what v8 doesn't know is v8 has no access to my network request, then it has no access to my file system, then it has no access to timers, then it has no access to DNS, and etc, and anything. It has all of this thing is handled by none other than libuv. So what libuv is, we'll discuss it now. Yeah, so libuv is a pure C library. Yeah, provides event loop, thread pool, right, which was originally written for nodejs. Libuv was written for nodejs. It is a component that gives nodejs a superpower. The superpower is non-blocking input output and true asynchronous behavior. This is the superpower which this libuv gives to nodejs. While our v8 engine runs our JavaScript, libuv handles everything that touches the operating system, also the network request, then our file reading thing, etc. Then we can think of it as v8 as the brain and libuv as the hand. Like libuv helps to libuv is help for heavy lifting tasks which are which requires more memory, which requires more time, more power, etc. So what libuv provides us? It provides us a event loop, then a file input output, network calls like which are TCP, UDP, DNS resolutions, then thread pool. So we'll just discuss it one by one. Yeah, I'll just write it here. What libuv provides us? ROVIDS provides us. Yeah, what it provides? First of all, it provides event loop, then a thread pool, then network, then a DNS resolution, then something more, but for now this much is important. So moving further, we'll discuss what a thread pool is. Yeah, so thread pool is, I'll just copy this. So some operations inside the OS can't be done like some operations cannot be done asynchronously inside the OS or at the OS level. For example, if I want to read a big file which is a heavy file, yeah, so I don't want my I don't want something to put extra efforts on that particular task. So what I'll do, I'll assign a thread, give the thread that particular thing to perform, like bhai tu ye le ye thread, it just calls that thread and tells bhai ye task hai, ye perform kar pura, and then bring it back to me. So by default, this thread pool has 4 threads. Yeah,
um, which performs a task without freezing the event loop. Due to this, the event loop is not freezed, like it does not stop. So by default, we have 4 threads. Like if I have these 4 tasks which are very important to perform, which are these tasks. Sorry. Yeah, these are the 4 tasks which I need to perform. So yeah, so these are the 4 tasks which I need to perform. Yeah, so each task, this task will take approx to 5 to 10 minutes. Yeah, so I can't expect my event loop to wait for 5 to 10 minutes, then again wait for the output of this, and then keep on continuing. Yeah, this event loop gets blocked here. So what it does, it has threads. By default it has 4 threads. What it will do, these are my 4 threads. It will tell bhai tu ye le ye thread, and you keep on performing the task. Then again this it will go and tell bhai this thread bhai tu ye le and performs this task. Then again this thread, this for this thread. Yeah, with this help, all my threads execute this, like and then give me the output. Yeah, which due to this my event loop does not freeze. And these threads are nothing but my cores. Like there are if we go to buy a computer or a laptop, like the owner usually says that 10 कोर है, 4 कोर है, 5 कोर है, ऐसा 6 कोर का है CPU ऐसा. So that is nothing but meant by thread. So we can manipulate these threads also. Like if I want these 2 tasks to perform a particular, if I have 4 tasks, and if I have 5 tasks and I have 4 threads, so the 5th task will take time to execute. Like if I have one more task which is XYZ, yeah, XYZ task I have, and this 4 threads are already occupied, right? So until and unless this my first thread is free, this task is on hold, yeah, right? So what I can do, I have a environment variable which is named as this. Yeah, this. With the help of this, I can manipulate the size of my threads. If I assign here, by default it's 4. If I give it 6, then 6 threads will pick up the task and continue it. This is nothing but meant by thread pool. Yeah, so we'll just see the full Node.js architecture now. The full Node.js architecture is nothing but all stacked together. First, it is our JS code. Then it is, which includes our whole main.js file, and then etc. More things like all my logic and routes and all, which is written here. Then second thing, I'll just give numbering. No, later. Then which is the Node.js core modules, which are my FS, then HTTP, then events, etc. Then I have my C++ bindings, which has a bridge, which is a bridge between JS and C++. Then I have my V8 engine, which V8 engine. So what it does, it has a call stack, which we saw now, which it has a heap which manages our memory, and a garbage collector. Then I have my libuv.
what it Libuv does, it has git event loop, then it has a thread pool, then all my async IO happens here, async IO, yeah. Then at the end I have my OS, which is my Linux or Mac OS or Windows, etc., which is the actual hardware, right? So C++ binding layer is what the magic happens, yeah. So when I call a particular thing which is yeah, this one. So when you write JavaScript, what happens, I have written this read file which accesses this file in this format, and then consoles it, right? Consoles the data. What actually happens under the hood, yeah? JS calls nodejs bindings, yeah. This JS calls my nodejs binding, which is a C++ function. Binding calls the libuv's uvfs read. Libuv delegates the OS to read the file, particular file. When done, Libuv puts callback into the poll queue. We'll discuss about poll queue later. So event loop picks it up, and our v8 runs our callback. Yeah, that is nothing but the whole thing which is happening in this 5 lines of code, 4 lines of code. Yeah, it's a heavy big process which is happening in the backend. Yeah, right. So later on, now as you have understood the whole summary of this, the basics of this, now we are officially confirmed to move to event loop. What event loop is? It is the heart of Node.js, right? We can say that. So what event loop is? Event loop is what Node.js event loop allows Node.js to perform non-blocking input-output despite being a single threaded, right? It is a continuous loop that check is there any work to do, any callbacks, or yeah, anything which is ready to run, and if yes, run them. If there is nothing to run, keep it as it is. So there are few things which it keeps on checking continuously. It checks the call stack, it checks the microtask, it checks the task queue. We'll discuss about it now. So there are basically 6 phases of this event loop. So what event loop does? Event loop, we'll just discuss about event loop here. Event loop. So what exactly this event loop does? Yeah, so the event loop allows Node.js to perform non-blocking in IO despite being single threaded. Yeah, and it also asks continuously keeps it is a continuous loop that checks भाई कुछ है तो नहीं करने को, कुछ है काम करने को, इज देयर एनी वर्क टू डू, अगर है तो कर दो, कुछ कॉल बैक्स है तो वो रन कर दो, अगर नहीं है तो मत करो. Yeah, so it acts just keeping our previous example which we discussed about the hotel thing. So what event loop here is the chef. Yeah, the waiter takes the order, gives it to the kitchen. Now there is a thing called as head chef which keeps a track on all my chefs, like all the dishes which are preparing. If I get a order, the head chef is responsible to assign the order to particular thing, yeah, to execute the order. And if it's executed, then please transfer it outside. This event loop is a never sleeping process. It keeps on continuing. Yeah, that is what it means. So it has 6 phases, like how it executes. Like you just go here. I have some phases, I guess, here.
Yeah, so what it has, so the way JS run on our system is completely different from our browser. Now we have got to know. So whenever in my this terminal, when I run any file which is one.js, yeah. So what happens here? I have written here what? I have written the node and the file name, right? Right. So this is the node and my file name .js, yeah. So what this command does? ये command क्या करता है? ये command रन करने के बाद एक प्रोसेस बनती है. ये command रन करने के बाद एक प्रोसेस बनती है. What this process is exactly? ये प्रोसेस बनती है, लाइक कौन सी प्रोसेस बनी भाई, बताओ तो मेरे को. ये एक प्रोसेस बन गई भाई, ये एक मस्त सी प्रोसेस बन गई. हाँ, ये मेरी हो गई प्रोसेस या. सो उसके बाद इसके बाद क्या होता है, एंड ये प्रोसेस के अंदर एक मेन थ्रेड एक्वायर करती है. के अंदर एक मेन थ्रेड एक्वायर होती है. ये मेन थ्रेड क्या है? दिस मेन थ्रेड इज नथिंग बट द सिंगल थ्रेडेड ऑफ जावास्क्रिप्ट which is responsible to run continuously. So this is my main thread. Yeah. So अभी क्या होता है, एंड दिस इज वेयर ये मेन थ्रेड के ऊपर अपना सारा कोड एग्जीक्यूट होता है. दिस इज द प्लेस वेयर द कोड इज एग्जीक्यूटेड. या अगर ये थ्रेड किल हुआ किसी भी तरह से, भाई मैंने किल कर दिया है थ्रेड, मतलब सिग्नल पास कर दिया कि लाइक जब भी व्हेन वी स्टॉप ऑन द टर्मिनल वी हिट कंट्रोल सी, या द कंट्रोल सी सेंड्स अ सिग्नल कि भाई बंद कर दो रन करना. तो मतलब क्या किया कि भाई मैंने थ्रेड किल कर दिया है. अगर ये थ्रेड किल हुआ तो अपना कोड चलना बंद हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट हाउ अ कोड इज रनिंग. या सो अभी ये फाइल के अंदर दिस फाइल नेम, ये फाइल नेम के अंदर कुछ कोड लिखा है JS में. सो देयर आर पर्टिकुलर स्टेप्स which Node.js team has written and which we would need to follow on how a JavaScript code is exactly run. So अपन देखते हैं कि क्या exactly वो steps है. तो एक बार होने के बाद there is a sequence, basically there is a sequence. Yeah. So what is this sequence exactly? सब जब भी मैंने ये रन किया तो एक प्रोसेस बनी, प्रोसेस के अंदर मेन थ्रेड हुआ, मेन थ्रेड असाइन हुआ, फिर ये मेन थ्रेड के अंदर प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ. इनिशियलाइज मेरा जो भी है प्रोजेक्ट, जो भी वो फाइल के अंदर कोड है. एक बार जैसे ही इनिशियलाइज प्रोजेक्ट हुआ तो मेन क्या है, अभी कोड इज रिटन इन 2 ways, लाइक मतलब एक ही वे में रिटर्न होता है, पर you can see there are root level code which is at the top level, which has my import statements, my console log, my variable declaration, etc., which is at the top level. Yeah. So पहले क्या कर दो भाई, तुम क्या कर दो, रन कर दो, रन टॉप लेवल कोड का रन कर दो, मतलब रूट लेवल कोड को. या तो मैंने किसी के भाई कर दिया टॉप लेवल कोड का रन, राइट. उसके बाद क्या करो, एक बार टॉप लेवल कोड रन हो जाए, उसके बाद जो भी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है मेरे, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, या अभी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स रन होने के बाद ये 2 थिंग है, मतलब अभी एज यू कैन सी इफ आई हैव दिस थिंग, या हियर अभी क्या है इसमें. सो सबसे पहले क्या कर दो, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स जो भी रन टॉप लेवल कोड रन कर दो. अभी इसमें टॉप लेवल कोड क्या है, एज यू कैन सी कॉन्सोल लॉग एक टॉप लेवल कोड है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है मैंने. या दिस इज अ टॉप लेवल कोड, राइट.
सो ये टॉप लेवल कोड को पहले रन कर दो, इसके बाद इंपोर्ट जो भी है, जो भी कुछ इंपोर्ट कर रहे हो वो, एंड देन उसके बाद जो भी इवेंट कॉल बैक्स है वो रजिस्टर कर दो. सो व्हाट हैपेंस कि भाई जब भी ये कोड रन होने को मिला तो जावास्क्रिप्ट ने पूरा लाइन बाय लाइन देखा कि क्या हो रहा है, तो इट इम्पोर्ट्स दिस, देन इसने देखा कि भाई एक कॉल बैक है यहाँ पे, तो ये रजिस्टर करके रख दो, देन कंसोल प्रिंट कर दो या देन उसके बाद इवेंट लूप देखेगा कुछ है क्या, देन इट सीज कि भाई हाँ कॉल बैक मैंने रजिस्टर किया था, देन ये कॉल बैक लिया उसने एंड देन वो प्रिंट करवाता है. सो if you see here, if I print this statement, node sorry cd I wait, do I have this? Yeah, I can't access this file, I have no idea. Yeah, so we'll just move ahead. So if I run this code, what happens? Yeah, node 1.js, what is this? Yeah, import statement. what is this? First क्या print हुआ? hello from top level code print हुआ, उसके बाद क्या print हुआ? hello from timer print हुआ. मतलब क्या हो गया, टॉप लेवल कोड पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद ये कॉल बैक प्रिंट हुआ विच इज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड. तो क्या बोलता है कि भाई तुम क्या कर दो, जो भी इवेंट के अंदर कॉल बैक्स है, इवेंट कॉल बैक्स है, वो रजिस्टर करके रख लो पहले. इवेंट कॉल बैक्स, आई हैव अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, विल जस्ट सी इट फर्दर. सो एक बार इवेंट कॉल बैक्स रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद इवेंट लूप अपना चालू कर दो. या तो नाउ इवेंट लूप स्टार्ट्स, एक जैसे ही इवेंट लूप स्टार्ट हुआ व्हाट हैपेंस, एक ये जैसे इवेंट लूप स्टार्ट हुआ अभी वो देखता है कुछ एक्सपायर्ड कॉल बैक्स है क्या मेरे जो रजिस्टर हुए हैं. लाइक या आई डू हैव एक्सपायर कॉल बैक विच इज एक्सपायर्ड 0 seconds, in 0 seconds. या सो दिस इज माई एक्सपायर्ड कॉल बैक. सो क्या करता है कि भाई तू क्या कर, पहले एक्सपायर कॉल बैक्स को प्रिंट करवा, एक्सपायर्ड कॉल बैक्स को ले ले और वो हैंडल कर दे, राइट. उसके बाद क्या देखता है, these are the phases. या you are just explaining the phases कि कोड कैसे रन होता है. उसके बाद इनपुट आउटपुट पुलिंग, जैसे कि एक फाइल टास्क है कि भाई आई वांट टू रीड अ फाइल या एनीथिंग एल्स, कि भाई मेरे को हैश करना है कोई पासवर्ड, इट्स अ बिग टास्क. या राइट. सो as soon as you move away from your expired callbacks, अगर कोई expired callbacks नहीं है या फिर सब execute हो गए हैं, then you go into the input output pooling. या input output pooling में क्या होता है, basically is nothing but the heavy task which is performed, like फाइल रीड करना हो या फिर किसी पासवर्ड को हैश करना हो या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या अभी के लिए तो इतना देखते हैं अपन, और भी है, आई जस्ट राइट इट डाउन. सेट इमीडिएट, इसके बाद होता है सेट इमीडिएट, ये इट कम्स अंडर द चेक फेज. सेट इमीडिएट एंड ऑल्सो द क्लोज कॉल बैक्स. क्लोज कॉल बैक्स क्या होते हैं कि इफ आई राइट समथिंग कि भाई ये अगर नहीं हुआ तो कनेक्शन क्लोज कर दो, मतलब किल कनेक्ट. अगर मैंने डेटाबेस से कनेक्ट किया फिर किसी से कनेक्ट किया है तो कुछ है जैसे कि ये कनेक्शन क्लोज कर देना, हाँ करना हो, तो दिस आर व्हाट क्लोज कॉल बैक्स आर मेंट फॉर. आई जस्ट टेल यू दिस इज द जस्ट रफ थिंग विच आई एम सेइंग, विल जस्ट डिस्कस इट मोर इन डिटेल. अभी इसके ये सब होने के बाद इवेंट लूप क्या करता है कि भाई एक एक करके इसमें जाता है कि भाई टॉप लेवल देखता है, फिर ये देता है, फिर इवेंट कॉल बैक रजिस्टर कर देता है. अगर रजिस्टर होने के बाद इवेंट लूप चालू होता है. एक बार इवेंट लूप चालू हो गया तो उसके बाद वो पहले देखता है कि कुछ एक्सपायर्ड कॉल बैक्स है क्या. एक्सपायर कॉल बैक्स नहीं है तो फिर वो इवेंट पुलिंग के पास जाता है, आईओ पुलिंग के पास जाता है. आफ्टर आईओ पुलिंग इज कम्प्लीटेड देन सेट इमीडिएट के पास जाता है. सेट इमीडिएट में जो है वो प्रिंट कर देता है, देन क्लोज कॉल बैक्स कॉल कर देता है, राइट. दिस इज द फ्लो. अगर उस अभी इनपुट आउटपुट पुलिंग इज अ हैवी टास्क. या राइट.
So it assigns a thread to this input output pulling IO pulling task, या एक थ्रेड असाइन कर देता है एंड देन वो बोलता है कि भाई तब तक मैं सेट इमीडिएट रन कर देता हूँ क्योंकि सेट इमीडिएट है मेरे पास. तो सेट इमीडिएट के बाद क्लोज कॉल बैक रन हुआ. क्लोज कॉल बैक के बाद लूप क्या क्या होता है, मतलब अगर मैंने कुछ गंदा कोड लिखा तो ये कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा. सो एक है कि वी डोंट हैव टू राइट अ ब्लॉकिंग कोड हियर, विच क्लिप्स ऑन रनिंग कंटिन्यूसली. सो आफ्टर क्लोज कॉल बैक्स उस वो देखता है, चेक करता है कि भाई कुछ बचा है क्या अपने पास. अगर बचा है तो उसमें जाओ. अभी क्या बचा था अपना इनपुट आउटपुट पुलिंग के अंदर जो टास्क था वो बचा था, तो वो चेक करता है कि भाई चेक्स इफ एनीथिंग पेंडिंग. अगर है, अगर नहीं है तो एग्जिट कर दो, अगर है तो कंटिन्यू कर दो. या दिस इज नथिंग बट व्हाट इज मेंट बाय इवेंट लूप. अभी अपन और डेप्थ में देखते हैं. दिस इज नथिंग, जस्ट ओवरव्यू कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या एंड ऑल. अभी विल जस्ट सी द ओवरव्यू. या सो व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन द Node.js documentation. It has basically these phases. It has 6 phases: timers, pending callbacks, idle, prepare, poll, check, and close callbacks. We'll discuss this one by one. Yeah. So I have just written it. What it is? Just see. Yeah. Yeah. So phase 1 timers, which has my two things, which is set timeout, yes, set intervals. Then pending callbacks. Then what are pending callbacks? Basically input output error callbacks या फिर anything else. Then idle or prepare, it is just for the internal use. We don't write any code in idle. Yeah, we don't have we don't need to write any code in idle. It's just a phase. Then poll phase fetches new input output events plus run callbacks. Check, what is the check phase meant by set immediate callbacks. And then close callbacks, socket on, which I said like भाई कुछ socket related है, मेरे को बंद कर देना है इसका. तो this is what it is. So how it works in detail we'll discuss. So when Node.js start, it initialize the event loop, runs the entire script, which may register timers, read files, etc. and then enters the loop. So इतना समझ क्या होता है कि whenever Node.js starts, वो पहले इनिशियलाइज करता है मेरे पूरे इवेंट लूप को, पूरे स्क्रिप्ट रन होती है. देन वो स्क्रिप्ट के अंदर टाइमर्स रजिस्टर होते हैं, फाइल रीडिंग होता है, एक्सेट्रा जो भी है. एंड वो सब होने के बाद इवेंट लूप में एंटर करता है फेज. एंड हियर इज व्हाट हैपेंस इन ईच फेज. तो टाइमर्स फेज विल से. तो टाइमर्स क्या है बेसिकली? टाइमर्स आर नथिंग बट दिस थिंग विच आई हैव रिटन हियर. या दिस इज नथिंग बट अ टाइमर, राइट? सो the timers phase executes callback that were scheduled with set timeout and set interval, right? But a timer specifies a minimum threshold. ये minimum threshold क्या है? 0 है. अगर मैंने यहाँ डाला, जैसे कि ये प्रॉब्लम में लाइक अगर मैंने ये कर दिया 1000 milliseconds, तो 1000 milliseconds इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड. वो क्या बोलता है कि 1000 milliseconds तक इसको रन मत करो. या मतलब अ टाइमर स्पेसिफाइज द मिनिमम थ्रेशोल्ड, नॉट द एग्जैक्ट टाइम कि भाई 1000 सेकेंड होने के बाद ही मेरे को एग्जीक्यूट करो. अगर ये टाइम आउट विच हैज पास्ड माई 1000 seconds, इट मूव्स इनटू माई टास्क क्यू, पर टास्क क्यू के पहले कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ ही नहीं है, तो ये कैसे रन होगा, राइट? अगर कॉल स्टैक में कंटिन्यूस प्रोसेस है तो टास्क क्यू से बाहर जाएगा ही नहीं वो. तो आई नो देयर आर मेनी jargons which I am speaking. We'll just discuss it now. So we'll just move to my क्या होता है एग्जैक्टली overview. Yeah, this is my call stack which keeps a track of how my entire code should run. These are my additional features which are DOM, fetch, timers, file, console, etc. This is my event loop. It's a small thing, yeah, but
it is a very important thing here. This is my task queue, also known as callback queue. Yeah, here this is the place where all my callbacks are stored. Then this is my priority microtask queue. This is where my promises are queued, right? Where all my promises are kept. So we'll just move to the task queue here, right? So what exactly the task queue does here? We'll just see that a normal example of call stack, yeah? So what happens here, console.log, which we saw previously here, yeah? This is what exactly happens in this example also. So I'll just keep this example aside and I'll just take another example, which is this one. Yeah, what is this? What does this example say? कि भाई तुमको मिला है example, this function is there, right? So what it does first, it is a function. Function के अंदर for loop है. Then again मैंने console print किया. Then here is the other function, and then I've called which function first? A long running task. So what it does, long running task जाता है call stack में आता है, या तो call stack में जब long running task आता है exactly, we'll just simulate it. It would be better if we simulate it here. I'll just refresh it and I'm not able to paste it. JS visualizer, yeah. Choose an example. Right? Okay. We'll see this function. Wait, let it be. So as soon as I hit run, what happens? Call stack में first आया, which is this first. Then second, then third, then fourth, then fifth, then sixth, then seventh, then eighth, then ninth, then 10th, and then what it does, पहले 10th को execute किया, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6. That is what nothing is done by this call stack. And what is this task queue, which I was telling you, timeout thing? It runs. It starts running. Yeah. What happens when I hit here? The step 1, my first timeout goes into my task queue. Then my second timeout goes into my B, which is goes into the gets added into the queue. Then again it goes here. Then after that, when I run the function goes in call stack. Yeah, the call stack is the most priority one. So every time the event loop checks if the call stack is empty, then only it runs the task queue. अगर कॉल स्टैक एम्प्टी ही नहीं है तो टास्क क्यू रन होगा ही नहीं. सिंपल. अगर कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया तो synchronously execute the script as though we are running the function body, run until the call stack is empty. Yeah, this is the script thing. कॉल स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया, अभी क्या कर दो, टास्क क्यू मेरा जो है वो कॉल स्टैक में आएगा. तो टास्क क्यू गया आया इधर, देन एग्जीक्यूट होके बाहर आ गया वो. देन अगेन देखा कि भाई पेंडिंग टास्क है, बी आया, रन करता है माइक्रो टास्क, एग्जिट हो जाता है. और कोई टास्क है, हाँ टास्क क्यू में ए पड़ा है, तो इट विल गो, ए कॉल स्टैक में आएगा, देन एग्जिट कर देगा. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट कॉल स्टैक इज एंड टास्क क्यू इज, विच वाज एक्सप्लेनिंग हियर इन टाइमर्स बेसिकली. सो देयर इज सो द टाइमर्स में जो टाइम देते हैं दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट टाइम कि भाई तुम मेरे को 10 मिनट में रन करके 5 मिली सेकेंड्स में रन करके दो. अगर मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी ही नहीं है तो टास्क क्यू में से वो टास्क कॉल स्टैक में आएगा ही नहीं. जब भी मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तब मैं टास्क क्यू से वो कॉल स्टैक में आ जाएगा. दिस इज नथिंग बट व्हाट वी मेंट. या so these are nothing but timers. Yeah, so what are callbacks? These are basically these is a timers. Yeah, this was a timer thing, right? Yeah, this was a timer thing. Now this is nothing but the callback. The thing you see here, this is nothing but the callback, pending callbacks. So this phase executes the input output callbacks that were defined to the next loop iteration. या सिंपल मतलब वो क्या करता है, अभी कॉल बैक्स देखो,
Third phase is idle phase. This phase is used internally by Node.js. We don't use we don't require this. We are never going to code in this phase. Fourth phase is the poll phase. The poll phase is where most of the real work happens. This poll phase. So what it does, calculate how long the block will take time to run the whole process and wait for new input output events. जो भी कितना भी टाइम लग रहा है एक प्रोसेस को वो कैलकुलेट करता है इधर, एंड प्रोसेस ऑल इवेंट्स इन अ पोल क्यू. इसका भी अलग से क्यू होता है, पोल क्यू. तो जैसे टास्क आएगा हैवी टास्क, वो पोल क्यू में चला जाएगा, राइट. So what happens when the loop enters the poll phase and there are no timer schedules? So this is a complicated thing. We'll discuss later, but you have understood what the poll phase does exactly. Then later on we'll move to the check phase. So check phase is where our set immediate comes in. So set immediate was specifically designed to run right after the poll phase completes. It's not a standard timer. It uses a libuv API that places callbacks inside a phase check phase queue. So just इतना कुछ नहीं है, बस you have to remember कि set immediate is responsible for check. So there is nothing much more important here. Like we'll just see it here. This is my call stack. As you can see the call stack example, thread pool, this thing. So after this check phase, we have the close callbacks. What are close callbacks? I have written a code here. I'll just show it to you. Yeah, this is my code. Instead of that, I'll show it here itself. This is my code for the close callbacks thing. Yeah, this thing. Force destroyed the socket triggers a close callback phase. So when you forcefully destroy something, like you refuse the connection or cut the connection down, it triggers a close callback. That is nothing but what a close callback is meant by. So these callbacks fire the close callback phase fire close events that for resources that were abruptly destroyed. This is what you have to remember about close callbacks. Yeah. Now we have seen the example of the queue thing. Yeah, right. Yeah. So priority queue, अभी task queue है, priority queue है, right? What we'll just think of कि भाई मेरे पास एक promise है, right? अभी I'll just delete this example and I have this other example which is set timeout one. So इसमें क्या होता है? Eventually when the code starts running, set timeout देखा, पहले सब register कर दिया callbacks, right? set timeout गया इसके अंदर, कहाँ पे गया? call stack के अंदर. इसने देखा तो इसने क्या कर दिया? register कर दिया एक callback which is this one. ये register हो गया, right? callback register किया यहाँ पे which is this one. पहले 2000 ms वाला callback register किया, set timeout 2000 गया, right? देन उसके बाद देखा अरे सेट टाइम आउट मेरे पास एक और है, तो क्या करेगा? ये वाला दिखेगा एंड देन इसका भी कॉल बैक रजिस्टर कर देगा यहाँ पे. अभी इसके पास दो है, तो व्हाट दिस डज, यहाँ से ये कॉल बैक अभी जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो गया 100 मिलीसेकंड ख़त्म हो जाएगा, ये कॉल बैक टास्क क्यू में आ जाएगा. लाइक इट इज शोन हियर, यहाँ पे आ जाएगा टास्क क्यू में. अभी मेरा कॉल स्टैक तो ये तो हट जाएगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये किया. अभी कॉल स्टैक एम्प्टी है, तो इवेंट लूप क्या करेगा? इवेंट लूप बोलेगा कि भाई कॉल स्टैक तो अब अपने पहले पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, सॉरी. तो ये सेट टाइम आउट हो गया 100 मिली के. अभी देखेगा कुछ है क्या? कॉन्सोल है, कॉन्सोल पड़ा है मेरा, तो कॉन्सोल जाएगा इवेंट कॉल स्टैक के अंदर. तो कॉल स्टैक के अंदर क्या है भाई? कॉन्सोल, इसको एग्जीक्यूट करना है ये स्टेप को, लॉग को. तो ये क्या करेगा? जाएगा और इधर प्रिंट करवा देगा एंड ऑफ स्क्रिप्ट, राइट? और वो ये हो जाएगा. अभी जैसे ही टाइम आउट मेरा 100 हो गया, तो 100 से ये टाइम आउट शिफ्ट हो जाएगा कॉल स्टैक में, क्योंकि कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं है, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली गोज हियर, इट गोज
दिए जाता है अंदर, एंड व्हाट हैपेंस, console log हो जाता है this thing gets consoled here. So after the end of script this get consoled here. Similarly this comes into task queue से इधर जाता है, ये हट जाता है, एंड देन यहाँ पे 2000 प्रिंट होके यहाँ पे आ जाता है. So this is what nothing but meant by task queue. अभी what if I have a promise also in this thing. अभी यहाँ पे set timeout भी है मेरे पास, promise भी है. तो इन दिस केस क्या होता है, अगर मेरा टास्क क्यू पहले से भरा हुआ है एंड आई ऑल्सो हैव अ प्रॉमिस, तो पहले प्रायोरिटी प्रॉमिस को दी जाती है. जैसे ही कॉल स्टैक मेरा एम्प्टी हो जाएगा तो प्रायोरिटी प्रॉमिस को दी जाएगी. आई डू हैव अ एग्जांपल ऑफ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस if it's not overwhelming, so we'll just discuss it. So yeah, this is my example of promise. तो उसने देखा कि भाई पहले रजिस्टर कर देते हैं पहले सब कुछ. उसने देखा कि भाई प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है, जल्दी से भाई रिजॉल्व हो गया है इसको. तो ये क्या करेगा, ये जाएगा मेरे इसके अंदर यहाँ पे, राइट, रजिस्टर हो गया है कॉल बैक. देन उसके बाद सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट भी रजिस्टर हो गया है इसके अंदर जाके, राइट, 10 सेकेंड्स का ये है. तो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा ये भी. आई जस्ट डिलीट प्रीवियस वन. अभी ये प्रॉमिस तो रिजॉल्व हो गया है, ऑन द गो ही रिजॉल्व कर दिया है, तो ये प्रायोरिटी क्यू में आ गया है, राइट. इतना समझ गया. अभी माइक्रो टास्क है, यहाँ पे टाइम आउट भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, 10 सेकंड तक वो वेट करेगा. अभी भाई तू रिक्वेस्ट ला किधर से रिस्पॉन्स ला, फिर तेरे को इधर डाल दूंगा टास्क क्यू में. फिर उसके बाद उसने देखा कि क्यू है माइक्रो टास्क का, तो ये पूरा जो है कॉल बैक ये पूरा रजिस्टर हो गया इसके अंदर, कहा यहाँ पे, राइट, सॉरी. एंड देन इसके बाद इसने देखा कि भाई ये तो एक माइक्रो टास्क है, तो व्हाट माइक्रो टास्क कैन डू, वो क्यू कर वो माइक्रो टास्क के अंदर एक और माइक्रो टास्क ऐड कर सकता है. तो इट गोज दिस कॉल बैक गोज इनटू माय प्रायोरिटी माइक्रो टास्क क्यू. अभी क्या होता है, दिस कॉन्सोल इज हियर, राइट. सो पहले ये कॉन्सोल कॉल स्टैक में जाएगा, कॉल स्टैक इज नॉट एम्प्टी नाउ, या. सो अभी कॉल स्टैक क्या देखेगा कि भाई 5 है इधर, तो मैंने क्या किया 5 प्रिंट कर दिया, कॉल ये डिलीट. अभी अभी इसका भी काम हो गया, 10 सेकेंड पास हो गया. अभी ये क्या करेगा, अभी ये 0 हो गया, राइट. तो ये कॉल बैक उठेगा और सॉरी ये आएगा टास्क क्यू के अंदर. सो टास्क क्यू में अभी इसका वैल्यू इधर है, राइट. तो टास्क क्यू भी भरा हुआ है मेरा, प्रायोरिटी क्यू भी भर रहा है, पर कॉल स्टैक एम्प्टी है मेरा, राइट. तो क्या होगा, प्रायोरिटी पहले माइक्रो टास्क को दिया जाएगा, एंड देन दिस गोज इनसाइड, एंड देन 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 1, एंड देन दिस गेट्स डिलीट. अभी एक और है क्या, हाँ एक और है मेरे पास, ये कॉल बैक आ जाएगा. अभी ये क्या देखेगा, कॉन्सोल लॉग, अभी क्या कॉन्सोल लॉग क्या बोलेगा 3, तो मैंने 3 को प्रिंट कर दिया. मतलब ये क्या होगा, इसके अंदर ये स्प्लिट हो जाएगा, राइट. तो ये कॉन्सोल लॉग 3 इधर जाएगा, एंड देन 3 यहाँ प्रिंट होके डिलीट हो जाएगा. अभी इसने क्या कर दिया, एक और माइक्रो टास्क को क्यू कर दिया. ये जो है ये टास्क क्यू हो गई, राइट. प्रायोरिटी क्यू तो एम्प्टी नहीं हुई मेरी, तो ये कॉन्सोल फिर से क्या होगा, यहाँ से कॉल स्टैक में जाएगा, एंड कॉल स्टैक में से इधर आके प्रिंट हो जाएगा. नाउ 4 इज प्रिंटेड हियर. अभी प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी, टास्क क्यू रिमेंस. टास्क क्यू में मेरा ये पड़ा हुआ है कॉल बैक. तो ये क्या करेगा, इवेंट लूप इसको कॉल स्टैक में डालेगा, एंड देन बोलेगा कि भाई तू 2 प्रिंट कर दे यहाँ पे, तो 2 प्रिंट हो गया. दिस इज वॉट नथिंग बट इज मेंट बाय माई the call stack, event loop, task queue, my priority queue. This is nothing but what is meant by this thing. Now we have some numericals which we'll discuss. अभी अपन ने एक थिंग ये बनाया है, फॉर्मेट बनाया है, राइट, कि भाई ऐसे ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करते जाओ, राइट, दिस थिंग. सो वील जस्ट कीप अ रेफरेंस ऑफ दिस, राइट. सो यहाँ पे, and then this code I'll just set it up.
So this thing, abhi we'll just go in this example, right? Set timeout है यहाँ पे, right? सेट टाइम आउट पहले देखते हैं क्या है. रन्स द टॉप लेवल कोड रन हुआ, एंड देन इम्पोर्ट स्टेटमेंट कुछ है वो है, कॉल बैक रजिस्टर हो गए ये यहाँ पे, एंड देन कॉन्सोल हो गया सेट टाइम. उसके बाद क्या है, सेट टाइम आउट विच इज़ द एक्सपायर्ड कॉल बैक ईयर. तो प्रिंट क्या हुआ, पहले हेलो फ्रॉम टॉप लेवल प्रिंट हुआ, देन हेलो फ्रॉम टाइमर प्रिंट हुआ, राइट? देन सेकेंड वाला तो यहाँ पे सेट इमीडिएट है, राइट? तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस थिंग व्हाट हैपेंस हियर, राइट? रूट लेवल रन हुआ, पहले विजुअलाइज करते हैं, पहले रूट लेवल रन हुआ, उसके बाद रजिस्टर हुआ है सब कुछ, कॉल बैक सब रजिस्टर हो गए. अभी इवेंट लूप पूछेगा कि भाई कुछ है क्या, तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई टाइम आउट रजिस्टर किया है, वो रन नहीं किया है, एक्सपायर्ड टाइम आउट है वो. तो ये कॉल बैक रन हो जाएगा, तो हेलो फ्रॉम टाइमर प्रिंट होगा, देन उसके बाद हेलो फ्रॉम इमीडिएट प्रिंट हो जाएगा, राइट? सिंस इमीडिएट इज बिफोर, सो I'll run this node to what it does. Sorry, hello from top level, then hello from timer, now hello from immediate. Now the main thing here, अगर मैंने console.log को comment out कर दिया, then what will be my output? Yeah, my output should be hello from timer and hello from immediate, right? But what happens here? What is printed first? Hello from immediate get printed first, and then hello from timer later on. So why this happens? So eventually when the code starts running, it registers all the callbacks when we have the root level code, right? So what Node.js also tells us कि भाई here it's 20 hours. Yeah, it tells set immediate, the order in which timers are executed will vary depending on the context in which they are called. If both of them from within the main module are called, then timing will bound by the performance of the process, which then can be impacted. मतलब इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है ये कब रन होगा, पर अगर मैंने रूट लेवल कोड लिखा है, देन वी नो दैट टाइमर्स विल प्रिंट फर्स्ट, देन उसके बाद सेट इमीडिएट प्रिंट हो जाएगा, राइट? So this is nothing but what we have seen or in the overview. So what you have understood this much. Now let's move to process.tick. Process.nextTick. What process.nextTick is? It is the most priority callback. It runs before every event loop and moves to next phase even before promises. मतलब इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, इसका अलग से क्यों होता है, पर दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉल बैक. लाइक तुम कितना भी कोड लिखो, पहले process.tick विल एग्जीक्यूट फर्स्ट. सो रूट लेवल के बाद process.tick एग्जीक्यूट होगा. सो आई हैव अ स्क्रीन शॉट, मतलब आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स, आई जस्ट प्रिंट राइट इट डाउन हियर. So as you can see, sorry, yeah, process.nextTick callback has the highest priority, then promises, then set immediate, then set timeout. Why this is happening? Set timeout क्यों पहले आया? क्योंकि रूट लेवल कोड नहीं है, एंड इसका कुछ फॉर्मेट नहीं है कि कैसे रन होगा. जैसे आपने Node.js के डॉक्यूमेंट में देखा, अगर मैंने रूट लेवल या फिर टॉप लेवल कोड लिखा ही नहीं है, देन ऑलवेज सेट इमीडिएट विल रन फर्स्ट, क्योंकि वो फेस चेक करता है लूप का. जब सब रजिस्टर हो गए कॉल बैक्स, उसके बाद फेस चेक होते हैं. दैट्स द थिंग, सेट इमीडिएट पहले रन होता है, देन उसके बाद सेट टाइम आउट रन होगा, एंड देन लास्ट में इनपुट आउटपुट कॉल बैक्स. सो देर इज ऑल्सो वन थिंग, अगर इनपुट आउटपुट कॉल बैक्स के अंदर सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट लिखा है, देन इन दैट केस सेट इमीडिएट विल रन फर्स्ट. या सो सेट टाइम आउट पहले कब रन होगा? जब भी मैंने रूट लेवल कोड लिखा है कुछ भी, उसके पहले रन होगा ही नहीं वो. सो आई विल जस्ट सी अ लास्ट एग्जाम्पल एंड देन जस्ट कवर अप.
So I have a thing, yeah, Node.js, yes. So this is my code. As you can see, I have written set timeout, which is taking, which is a set timeout, then set immediate, then promise, then process.nextTick, and also in FS I have written these things, right? Now what would be the thing here? As you know, top level code will execute first, right? Which is the synchronous code. उसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो चेक करेगा कि पहले कॉल बैक सब रजिस्टर कर देगा. सेट टाइम आउट का कॉल बैक रजिस्टर हो गया, इमीडिएट का ये हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट शुड, according to this my priority, what should run next? process.tick, right? So synchronous code के बाद process.tick रन होगा. उसके बाद promises रन होंगे क्योंकि वो माइक्रो टास्क है. टास्क क्यू बाद में रन होती है, माइक्रो टास्क पहले रन होते हैं. देन उसके बाद सेट इमीडिएट, इसके बाद सेट टाइम आउट रन होंगे. वील जस्ट चेक इट. node internals, क्या रन हुआ पहले देखो. सिंक्रोनस कोड पहले रन हुआ, फिर process.nextTick रन हुआ, फिर प्रॉमिस रन हुए, फिर हमारा टाइम आउट रन हुआ. टाइम आउट ये इग्नोर कर दो, ये क्यों आया? सेट इमीडिएट पहले क्यों था? क्योंकि ये इसके अंदर लिखा. अगर मेरे पास रूट लेवल कोड है तो टाइमर्स विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम फर्स्ट बिफोर इमीडिएट. सो उसके बाद टाइम आउट हुआ, फिर सेट इमीडिएट हुआ. देन अभी मैंने ये फाइल के अंदर आया, मैं ये कॉल बैक के अंदर व्हाट आई सी कि भाई पहले रूट लेवल है क्या, कुछ है, कॉन्सोल है. तो आई जस्ट प्रिंट दिस पोल फेस, दिस इज माई पोलिंग फेस. तो पोलिंग फेस के अंदर एक बार वो पोलिंग फेस के अंदर है, मतलब वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे है. पोलिंग फेस के बाद क्या है, क्या चेक करता है वो? नेक्स्ट टिक चेक करता है क्योंकि वो हैश प्रायोरिटी है, राइट? नाउ इट गोज एंड चेक्स नेक्स्ट टिक है क्या? हाँ है नेक्स्ट टिक, तो नेक्स्ट टिक प्रिंट कर दो. नेक्स्ट टिक प्रिंट हो गया. प्रॉमिस है क्या? हाँ है प्रॉमिस, तो प्रॉमिस प्रिंट कर दो. उसके बाद सेट इमीडिएट देखता है क्योंकि टाइमर तो कहाँ पे? टाइमर तो पहले था. इवेंट कॉल बैक्स, इवेंट लूप स्टार्ट होने से पहले, इवेंट लूप स्टार्ट होने के बाद टाइम आउट रन होते, राइट? पर यहाँ पे FS के अंदर if you see, set immediate has first priority before timeout, right? So set immediate पहले run होगा, which is here this thing, and then set timeout will run. So this was the entire summary of this ki what exactly Node.js is, how event loop works, how what are microtasks, what are event loop, what are microtasks, what are task queues. So what is process.nextTick, process promise, microtask, async await, then set timeout. This is what we have learned till now. So I'll just give a brief summary of what exactly we have seen currently from the start, which is I do have an example of this, of the set timeout. Yeah. What is this कि भाई ये जो है, सॉरी, yeah, what you can see, there is a difference between set timeout and set immediate. Designed for runs after current poll phase ends and runs after minimum delay. check phase में होता है या टाइमर फेज में होता है. guaranteed order, yes, always first इनसाइड इनपुट IO. अगर IO फेज में है तो हमेशा पहले रन होगा. एंड दिस इज नो डिपेंड्स ऑन OS शेड्यूलिंग. इनसाइड IO ऑलवेज रन्स बिफोर सेट टाइम आउट एंड ऑलवेज रन आफ्टर सेट इमीडिएट. एंड आउटसाइड IO ऑर्डर इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक. वाई इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक? अगर मैंने रूट लेवल या टॉप लेवल कोड लिखा है तो ऑलवेज मेरा सेट टाइम आउट पहले रन होगा. अगर मैंने टॉप लेवल कोड नहीं लिखा है तो सेट immediate पहले run होगा. So yeah, this is what the execution order is. So I do have a execution orders thing also, which we can just look in. पहले asynchronous code run हुआ,
देन उसके बाद process.nextTick रन हुई, फिर promises रन हुए, set immediate रन हुआ, time out, then IO, then etc etc. So yeah, hello, गायब हो गया था इतना देर तक. So this is the defining order. So what we have learned till now, from the start itself, we have shown that JavaScript is single threaded. The one thread है, stack है, one call stack है, V8 engine आता है, then libuv आता है, then nodejs बनता है libuv V8 engine और binding के साथ, then call stack के पास एक lifo then V8 engine के पास एक call stack है, उसके पास which is lifo, then libuv के पास एक event loop है which has 6 phases, which is timer, pending, callbacks, idle, poll phase, check phase, close callbacks phase. This is a fixed order, right? And the order keeps on the timer's order keeps on changing, right? Then we have the thread pool, which are default 4 threads, which is heavy sync operations, which are input output things. Then you can perform we can also access multiple threads. Then what is process.nextTick, which is process.nextTick runs before every event loops, runs before the event loop moves to the next phase. जब भी event loop मेरा next phase में जाएगा, उससे पहले process.nextTick run होगा to ensure that anything doesn't happen in between. Then set immediate क्या है, runs in the check phase में set immediate run होगा, which is always after poll. But inside input IO phase, it will always run before set timeout. Promise.microtask क्या है, which always runs after next tick. Promises हमेशा नेक्स्ट टिक के बाद रन होते हैं एंड बिफोर सेट इमीडिएट रन होते हैं. तो ये पूरा एग्जीक्यूशन ऑर्डर है पूरा Node.js internals का. So with this we have covered the whole entire Node.js internals. If you feel you have any doubts in this, so please comment down below. I'll surely solve all the doubts, and please give feedback on how the entire Node.js video was. I'll try to make more videos on this. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you.